Yeah. Am I visible? Visible, guys? चलो, all right. So let's start with our session. And आज के सेशन की अगर हम बात करें, so आज हम प्राइमरली दो चीजों को डिस्कस करेंगे बेटा. ठीक है. आज के हमारे स्लाइड के सेशन में we'll be primarily focusing on two things. One is related to certain legal terms and maxims. ठीक है. And along with that, we'll be moving on towards certain questions on our Constitution of India. ठीक है. ये दोनों चीजें अपन आज के सेशन में कवर कर ठीक. रेस्ट आप लोगों के जो भी कंसर्न्स थे कि एआर का सेशन एंड जीके का सेशन, परेशान मत हो. टुमारो एट 1 PM. ठीक है. 1 PM tomorrow there will be all subjects marathon for your SLAT. ठीक है. सारे ही सब्जेक्ट्स जो आपके SLAT के एग्जामिनेशन में आते हैं उन सारे ही सब्जेक्ट्स की मैराथन कल आपकी अलाइन होगी. 1 बजे से वो मैराथन रहेगी. ठीक है. विच विल बी कवरिंग ऑल द 5 सब्जेक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ योर SLAT एग्जामिनेशन. ठीक है. शुरू करें फिर. चलो एक एक करके हम अपने लीगल टर्म्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. So the first legal term which we have is, or the maxim which we have is actus non facit reum nisi mens sit rea. This is a kind of a maxim which is central, which is absolutely central to the rule of criminal liability. है ना. क्रिमिनल लाइबिलिटी का भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक एग्जिस्ट करता है जिसके हिसाब से देयर मस्ट बी टू थिंग्स विच मस्ट बी प्रेजेंट in order to declare a particular kind of act as a crime. Yes or no? किसी भी एक्ट को क्राइम की तरह डील करने के लिए, किसी भी एक्ट को क्राइम की तरह पनिश करने के लिए, there has to be two things which are required to be present over there in that particular offense or act, which is actus reus and mens rea. Actus reus is the physical aspect of your crime. ठीक है. That's the physical act जो कि related होता है आपकी एक्टिविटी से. And second is the guilty intention. एंड उसी चीज को जब हम मैक्सिम में देखते हैं तो मैक्सिम इज एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट rea. दैट इज एन एक्ट इन इटसेल्फ कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ क्राइम अनलेस अकम्पनीड विद गिल्टी इंटेंशन. जब तक एक्टस रियस के साथ मेंस rea प्रेजेंट नहीं होगा तब तक आप किसी भी एक्ट को क्राइम की तरह पनिश नहीं कर सकते. ठीक है. सो द इंटेंट एंड द एक्ट मस्ट बोथ कंकर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, and this is something which is fundamental to criminal law, highlighting the necessity of both act and the intent for a crime. Okay. So this was the first one. Let's move to the next one. Now the next one which we have is audi alteram partem. Audi alteram partem is something which is related to principles of natural justice. Yes or no? है ना. ये चीज तो आप लोगों ने क्लैट और रिलेट के लिए भी पढ़ी होगी. That is the principle of natural justice. Principle of natural justice का मतलब क्या है कि these are those principles which are central to decision making by an authority. And वहां पर primarily 3 principles आपके principle of natural justice का part बनते हैं. And these 3 principles are, number 1 is audi alteram partem. ठीक है. Which is related to the rule of fair हियरिंग. ठीक है. कि आप भाई किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अगर आपको किसी तरीके का डिसीजन लेना है, यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन विदाउट हियरिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है. आप उसकी बात सुने बिना उस पर्सन को पनिश नहीं कर सकते. दैट इज नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड. दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. द सेकेंड वन इज रूल अगेंस्ट bias. That is, no one should be a judge in his or her own cause. एक पर्सन अपने ही खुद के रिलेटेड केस में खुद वहां पर जज नहीं हो सकता. That is rule against bias. That's the second principle of your natural justice. And the third one is reasoned decision, या जिसको हम स्पीकिंग ऑर्डर भी कहते हैं. रीजन डिसीजन और स्पीकिंग ऑर्डर,
दैट इज आप जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन लोगे, योर जजमेंट शुड बी बैक्ड बाय सर्टेन काइंड ऑफ रीजंस. आप बिना रीजन प्रोवाइड किए किसी पर्सन को पनिश नहीं कर सकते. So the first principle of natural justice is odi alterum partem, which is given over there, and it simply says that no man shall be condemned unheard, and this is a basic principle of natural justice and fair hearing. ठीक है, clear everyone? Clear है भाई? बताते हुए चलना अगर समझ में नहीं आए तो. ठीक है, चलो let's move to the next one. Next one is actori incumbit onus probendi. ठीक है, actori incumbit onus probendi. This is about the rule of burden of proof in the cases in front of the court. कि कोर्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर्सन के ऊपर होगा. बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है कि इफ यू आर गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू क्लेम समथिंग, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू क्लेम समथिंग, देन द बर्डन इज एक्चुअली ऑन यू, दैट यू आर सपोज्ड टू प्रूव एवरीथिंग जो आपके साथ हुआ है. यस और नो, है ना बच्चे? नोट करते हुए चलना, ठीक है, साथ में शॉर्ट हैंड नोट्स अपने बनाते हुए चलना, ठीक, ताकि आप इजीली उनको रिवाइज कर पाओ. सो एक्टोराई इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडाई का मतलब सिंपल सा ये होता है दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ. बेसिक रूल है. अगर क्रिमिनल लॉ की बात करोगे आप, तो क्रिमिनल लॉ में द बर्डन इज एक्चुअली ऑन द प्रोसिक्यूशन, है ना. क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होता है. सिमिलरली सिविल लॉ के अंदर प्लेंटिफ, दैट इज द पर्सन हु इज गोइंग and filing a case in the court of law, the burden is actually upon the plaintiff that he is supposed to prove everything in the court of law. ठीक है, and it is central to the civil litigation and the concept of burden of proof, that is actori incumbit onus probendi. ठीक है, पीडीएफ बाद में बेटा आपको मिल जाएगी, बट शॉर्ट हैंड नोट्स आप लोग भी खुद बनाते हुए चलो. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज actus reus. actus reus अभी अपन ने समझ लिया. actus reus का बेसिक मतलब क्या है कि दिस इज द गिल्टी एक्ट और दिस इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ क्राइम. ठीक है, क्राइम में actus reus और mens rea दोनों होते हैं. actus reus is actually the physical aspect of the crime and mens rea is actually the mental aspect of the crime. ठीक है, so actus reus is the guilty deed or act, and along with mens rea this is crucial for understanding criminal liability. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट वन इज बोनाफाइड. ठीक है, ये दो टर्म्स आप लोगों ने जरूर सुने होंगे. वन इज बोनाफाइड एंड इसी का जस्ट ऑपोजिट टर्म होता है जिसको हम कहते हैं मैलाफाइड. सुने ये दोनों टर्म्स, बोनाफाइड एंड मैलाफाइड. बोनाफाइड मतलब समथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, yes or no, and malified is basically something which is done in bad faith. ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो डिफेंस होता है जो आप क्रिमिनल लॉ में यूज करते हो या सिविल मैटर्स में आप यूज करते हो, दैट इज द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी बोनाफाइड इन नेचर. यस और नो, है ना. मिस्टेक ऑफ फैक्ट का सिंपल सा हिसाब होता है कि इट शुड बी बोनाफाइड इन नेचर. तो बोनाफाइड का मतलब होता है कि समथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, and this is essential for contracts and dealings, indicating honesty and sincerity of the person. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next one is damnum sine injuria. वही चीज जो 2 दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे थे. यहां पर 2 टर्म्स है, one is damnum, the other one is injuria. ठीक है, एंड तीसरा टर्म जो इन दोनों को कनेक्ट करता है that is sine. साइन का मतलब होता है विदाउट. डैमनम इज लॉस एंड इंजूरिया इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, है ना. इंजूरिया इज बेसिकली वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स. इज डैमनम साइन इंजूरिया एनफोर्सेबल इन नेचर? जल्दी से बताओ, इज इट एक्शनेबल इन नेचर? Damnum sine injuria क्या actionable in nature होता है? आंसर इज नो ना. Damnum sine injuria is not actionable in nature. सिंपल सा हिसाब है. This simply means damages without legal injury, and it is important for understanding the tort law and the concept of actionable wrongs. And damnum sine injuria is per se not actionable in nature. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now, the next term which we have is de facto.
ठीक है, देखो दो टर्म्स होंगे जो आपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रिलेशन में देखे होंगे. दैट इज प्रेसिडेंट इज सेड टू बी समवन हु इज डी ज्योरे हेड ऑफ द स्टेट और डी ज्योरे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. एंड प्राइम मिनिस्टर इज समवन हु इज डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट. यस और नो. डी फैक्टो का मतलब क्या होता है कि इन रियलिटी और as a matter of fact, वो हो सकते हैं लीगली दूसरी चीज हो, बट इन रियलिटी एक अलग चीज है. जैसे हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन दिस कंट्री इज एक्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इज ही समवन हु इज एक्सरसाइजिंग द रियल पावर्स? भाई रियल पावर वो थोड़ी ना एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो इन रियलिटी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है? वो तो प्राइम मिनिस्टर है. ही इज द डिफैक्टो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. यस और नो. तो डी फैक्टो का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन एक्चुअलिटी, दैट इज स्पेशली व्हेन कॉन्ट्ररी टू और नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एंड दिस इज सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस एज अपोज्ड टू लॉजिकल रिकग्निशन. ठीक है, क्लियर? तो दिस इज समथिंग व्हिच इज डी फैक्टो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. एक्स पोस्ट फैक्टो जब भी टर्म पढ़ो ना, ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट. ठीक है, जैसे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 गिव्स अस प्रेडिक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज. यस और नो. आर्टिकल 20 क्लॉज 1 गिव्स अस प्रेडिक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. मतलब क्या है वहां पर? भाई सिंपल सी चीज है कि एक्ट होने के बाद जब आप कोई चीज कर रहे हो, ठीक है, उसको एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं. So ex post facto simply means out of the aftermath or after the fact, and this pertains to laws applied retroactively, significant in criminal law. ठीक है. de facto का मतलब सिंपल सा होता है बेटा as a matter of fact. तुम्हें लगता होगा कि घर पे सिर्फ तुम्हारी बात चलती है, बट क्या रियलिटी में वो चीज है ना? तुम्हें लगता होगा कि घर में सिर्फ तुम्हारी बात मानी जाती है, बट क्या वो रियलिटी में है? तो नहीं. द डी फैक्टो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी माइट बी इज द और आर द पेरेंट्स ऑफ द हाउस. यस और नो. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज इंजुरिया साइन डैमनम. ठीक है, वही डैमनम साइन इंजुरिया का जो ऑपोजिट है, दैट ऑपोजिट टर्म इज इंजुरिया साइन डैमनम, व्हिच सिंपली मींस वेयर देयर इज अ violation of legal right without damages. Violation of legal right without damages. And this is something, injuria sine damnum is something which is actionable in nature. ठीक है, so this is injury without damages and highlights the concept of violation of legal rights without causing any loss or damage to the plaintiff. ठीक है, correct. चलो let's move to the next one. The next term is lex loci. ठीक है, the next one is lex loci. देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है lex loci, एक होता है lex fori. lex का मतलब होता है लॉ, लोसाई का मतलब होता है लैंड, एंड फोराई का मतलब होता है फोरम. ठीक है, लोसाई का मतलब होता है लैंड एंड फोराई का मतलब होता है फोरम. तो लेक्स लोसाई बेसिकली रेफर्स टू द टर्म लॉ ऑफ द लैंड, एंड लेक्स फोराई का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम. ठीक है, ठीक. And lex loci basically refers to the law of the place, and this is important in private international law and a particular branch of law which is known as conflict of laws. यहां पे लेकिन तुम सिर्फ इतनी सी बात याद करके रखो. ठीक है, यहां पे सिर्फ तुम इतनी सी बातें याद करके रखो कि इट विल बी लेक्स लोसाई का मतलब लॉ ऑफ द लैंड एंड लेक्स फोराई का मतलब लॉ ऑफ द फोरम. ठीक है, दीता बेटा विल बी कंटिन्यूइंग दोस क्वेश्चंस इन टुमारोज मैराथन. आज हम कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे बच जाएंगे ना, वो हम कल वाली मैराथन में कवर कर लेंगे. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज नेमो बिस पुनितर प्रो एयरदम डेलिक्टो. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट मैक्सिम. ठीक है,
which is central to the concept of double jeopardy. Double jeopardy का protection which is given to us by Article 20 Clause 2 of the Constitution of India, है ना? Double jeopardy का concept आपने सुना ही होगा, right? That no person shall be punished more than once for the same offense, right? That is the basic protection which is given to us by Article 20 Clause 2 of the Constitution of India. वही डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल जिस लैटिन मैक्सिम पे बेस्ड है ना, वो ये मैक्सिम है, दैट इज नेमो बेस पुनितर प्रो एओदम डेलिक्टो, दैट इज नोबडी कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, एंड दिस इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जियोपार्डी. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट वन इज नेमो डेबिट एसेक्स जुडिक्स इन प्रोप्रिया कॉजा. ठीक है, नेमो डेबिट एसेस, उसी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में जो एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज रूल अगेंस्ट बायस, राइट? उसी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है दैट इज रूल अगेंस्ट बायस, राइट? रूल अगेंस्ट बायस से रिलेटेड जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, रूल अगेंस्ट बायस से रिलेटेड जो आपका मैक्सिम है ना, वो ये मैक्सिम है, दैट इज नेमो डेबिट एसेक्स जुडिक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, which simply says that no one should be a judge in his own cause, and this is another basic principle of natural justice. ठीक है, clear? चलो let's move to the next one. विद्या बेटा, कल आप लोगों की सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन अलाइंड है 1 बजे से. ठीक है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, मैं अभी भी दोबारा बता दूंगा. ठीक, 1 बजे से कल आप लोगों की सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन अलाइंड है, जहां पर जितने भी आपके स्लैट के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे. 1 बजे से वो मैराथन स्टार्ट होगी, एंड दैट विल इंक्लूड जीके एंड एनालिटिकल एज वेल. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेस जुडिकाटा. ठीक है, प्रिंसिपल इज रेस जुडिकाटा. अब इन दो टर्म्स का डिफरेंस अभी यहीं पर आप समझ लो. ठीक है, एक टर्म है रेस जुडिकाटा and another term is res sub judice. ठीक है, one is res judicata and the other one is res sub judice. दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना. दोनों का एक कॉमन जो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो ये है कि subsequent case between same parties will not be heard. ठीक है, दोनों का एक जो बेसिक कॉन्सिक्वेंस है ना, दोनों का बेसिक कॉन्सिक्वेंस यही है, चाहे आप रेस जुडिकाटा की बात करो या रेस सब जुडिस की बात करो, दोनों में एक बेसिक कॉन्सिक्वेंस ये है दैट सब्सिक्वेंट केस विल नॉट बी हर्ड बाय द कोर्ट इफ द केस इज फाइल्ड बिटवीन द सेम पार्टीज. सिमिलर पार्टीज के बीच में अगर दूसरा दोबारा एक केस फाइल किया गया, उसको कोर्ट नहीं सुनेगा. अंतर दोनों में यह है कि यहां पे द केस बिटवीन सिमिलर पार्टीज ऑन द सेम इशू was already decided by the court. ठीक है, यहां पर the case between similar parties on the same issue was already decided by the court, and therefore subsequently by the application of res judicata the similar case will not be heard by another court. Res sub judice में क्या है, that the similar case between same parties on the same issue is pending before a court. ठीक है, तो रेस सब जुडिस कब अप्लाई किया जाता है? रेस सब जुडिस कब अप्लाई किया जाता है? जैसे मेरे और आपके बीच में मान लो इस वॉच के सेल एंड परचेज के लिए कोई डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, और हमने ऑलरेडी केस फाइल कर दिया कोर्ट में. अब सब्सिक्वेंटली कि मैं दोबारा इसी चीज को लेकर किसी केस में कोर्ट फाइल कर सकता हूं क्या? मतलब किसी कोर्ट में केस फाइल कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो.
क्योंकि भाई यहां पर रेस सब्जुडिस की डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी और सब्सिक्वेंट केस को नहीं सुना जाएगा। रेस जुडिकाटा में क्या है कि तुम्हारे और मेरे बीच में इसी वॉच के सेल एंड परचेज के लिए कुछ डिस्प्यूट था, हमने कोर्ट में केस फाइल किया और कोर्ट ने उस केस का जजमेंट दे दिया। सब्सिक्वेंटली अब सिमिलर पार्टी सेम इशू पे केस फाइल नहीं कर सकती है। दैट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो, तो रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है? दैट इज अ मैटर ऑलरेडी जज्ड and this is fundamental for understanding the finality of judicial decision. ठीक है, clear everyone? Clear? चलो, let's move to the next one. Next is stare decisis. ठीक है, next is stare decisis. You must have heard now that the judgments of the Supreme Court and the High Court in this country hold a precedential value over the lower courts and tribunals. Yes or no? वो हाँ हायर कोर्ट में कर सकते हो क्योंकि वो अपील होती है। ठीक है, वो सिमिलर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं होते। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, राइट? दैट द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट होल्ड प्रेसिडेंशियल वैल्यू। प्रेसिडेंशियल वैल्यू का मतलब क्या है? बाइंडिंग वैल्यू है उनकी। द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल। यस और नो? तो ये जो बाइंडिंग वैल्यू या प्रेसिडेंशियल वैल्यू जिस मैक्सिम के थ्रू हम देते हैं ना, दैट मैक्सिम और डॉक्ट्रिन इज नोन एज स्टेयर डिसाइसिस। दैट इज टू स्टैंड बाय द थिंग्स डिसाइडेड, एंड दिस इज समथिंग which leads to the doctrine of precedent, which is essential for common law system. ठीक है, तो स्टेयर डिसाइसिस basically means that the judgments of the court have a binding value or binding authority over the lower courts. ठीक, चलो, let's move to the next one. Now, next one which we have is ultra vires. अब अल्ट्रा वायर्स या वायर्स टर्म से रिलेटेड आप दो मैक्सिम्स को देखोगे या दो फॉरेन फ्रेजेस को देखोगे। वन इज नोन एज अल्ट्रा, द अदर वन इज नोन एज इंट्रा, एंड द कॉमन टर्म एसोसिएटेड विद दीज टू इज वायर्स, दैट इज पावर। ठीक है, तो अल्ट्रा वायर्स बेसिकली मीन्स समथिंग विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द अथॉरिटी, and intra wires is something which is within the power of the authority. ठीक है, so if state legislature decides to legislate on the union list, ठीक है, अगर state legislature ने union list पे law बनाने का decide कर लिया, तो उस एक्शन को आप इंट्रा वायर कहोगे या अल्ट्रा वायर्स कहोगे? जल्दी से बताओ। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने डिसाइड कर लिया कि भाई वो यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाएंगे, so that thing will be considered as intra wires or ultra wires? That will be considered as ultra wires now, because state legislatures don't have the authority to legislate on union list. Yes or no? बस ultra wires का मतलब beyond the authority and intra wires का मतलब within the authority. So ultra wires means beyond the powers, and this is used to describe actions taken beyond one's legal power or authority. ठीक है, clear everyone? चलो, let's look at the next one. The next one which we have is pacta sunt servanda. This is something which lays down the foundation of law of contracts as well as the law of treaties. ठीक है, pacta sunt servanda, this is something which lays down the foundation of law of contracts and law of treaties as well. ठीक है, और pacta sunt servanda का मतलब क्या है? Agreements must be kept. ठीक है, it basically means agreements must be kept. That is, it is a fundamental principle in the contract law and international law. ठीक, clear? Clear everyone? यहां तक clear guys? चलो, सो बाकी के जो टर्म्स एंड मैक्सिम्स हैं, we'll be taking them in tomorrow's marathon. Now we'll solve around 50 questions related to the Constitution of India. And ये questions basically Constitution के historical background, making of the Constitution, sources of the Constitution, structure of the Constitution, and some of the questions are related to
फंडामेंटल राइट्स एज वेल। ठीक है, इन सारी चीजों से रिलेटेड अब अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो, सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, which of the following acts is known as the act for good government of India? A, regulating act of 1773, B, government of India act of 1858, C, Indian councils act of 1861, or D, Indian independence act of 1947. What's the correct answer, guys? The correct answer is very good beta. The correct answer is the government of India act 1858 is known as the act for good government of India, क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू क्या किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नेंस की पावर को लेकर द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज शिफ्टेड टुवर्ड्स क्राउन। ठीक है, इसी वजह से वो इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बुलाते थे। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज थ्रू व्हिच एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू व्हिच एक्ट? ए, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, सी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 2? सेकंड का करेक्ट आंसर इज करेक्ट बेटा, करेक्ट। इट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहीं से वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नेंस के ऊपर काम करना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो द फर्स्ट एक्ट थ्रू व्हिच अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटेड गवर्नेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। चलो, वेरी गुड गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which act introduced the concept of diarchy in the provinces? ठीक है, which act introduced the concept of diarchy in the provinces? A, Government of India Act 1858, B, Indian Councils Act of 1909, C, Government of India Act 1919, or D, Government of India Act 1935. हाँ जी, what's the correct answer in question number 3? थर्ड में करेक्ट आंसर क्या है भाई? चलो देखो, डायरकी है क्या? डायरकी के थ्रू किया क्या गया था? दैट फेडरल, ठीक है, फेडरल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, एंड फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वन वाज टर्म्ड एज ट्रांसफर्ड and the other one was reserved. Transferred subject council of minister manage करते, ठीक है, reserved subjects were to be given to the governor's executive council. इस system of governance को हम डायरकी कहते हैं। तो डायरकी को जहां पर सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू डायरकी को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉन्टेग-चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू व्हिच एक्ट? मॉन्टेग-चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू व्हिच एक्ट? ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, or the Indian Independence Act of 1947. हाँ जी, what's the correct answer? It was बेटा मॉन्टेग-चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी एक्ट का जो दूसरा नाम था ना, वो मॉन्टेग-चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म था। और यहां पे था क्या कि चेल्मसफोर्ड वाज एक्चुअली द वाइसरॉय ऑफ आवर कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, and Montagu was the Secretary of State for India at that point of time. ठीक है,
सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ही हम मॉन्टेक चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following acts abolished the East India Company's rule in India? Which of the following acts abolished the East India Company's rule in India? A. Indian Councils Act of 1861. B. Government of India Act 1858. C. Pitt's India Act of 1784. Or D. Charter Act of 1833. What's the correct answer? इसका तो आंसर खैर अपन ने अभी डिस्कस कर ही लिया था ऑलमोस्ट, है ना. The correct answer is correct. It is the Government of India Act 1858 through which the East India Company's rule was abolished in our country. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is the idea of the Constituent Assembly to frame a constitution for India was first suggested by whom? The idea of Constituent Assembly to frame a constitution for India was first suggested by whom? A. Mahatma Gandhi. B. Dr. B.R. Ambedkar. C. M.N. Roy. Or D. Jawaharlal Nehru. What's the correct answer in question number 6? Anji, 6th का correct answer is correct. 6th का correct answer is M.N. Roy. M.N. Roy was basically a communist leader. ठीक है, he was one of the communist stalwarts at that point of time, and he basically gave the idea for the first time that there should be a constitutional or constituent assembly for India which should enact India's constitution. ठीक है, so the correct answer was option C. चलो let's move to the next one. Now the next question is the communal award was introduced in 1932 by which British Prime Minister? The communal award was introduced in 1932 by which British Prime Minister? A. Lord Irwin. B. Winston Churchill. C. Ramsay MacDonald. And D. Clement Attlee. What's the correct answer in question number 7th? 7th का आंसर इज, अच्छा तुम सबको पता है ना कम्युनल अवार्ड एग्जैक्टली था क्या? कम्युनल अवार्ड वो बेसिकली आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स का एक फर्दरेंस था. ठीक है, जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया था टुवर्ड्स दलित्स एज वेल, है ना. एंड दीज कम्युनल अवार्ड्स वर बेसिकली अनाउंस्ड इन 1932 बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजी मैकडोनाल्ड. ठीक, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ the next question is the Simon Commission was sent to India in which year? The Simon Commission was sent to India in which year? A. 1927, B. 1928, C. 1930, and D. 1935. What's the correct answer? Simon Commission came to India in which year? देखो साइमन कमीशन का था क्या, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना ना, तो उसमें ये एक प्रोविजन लिख दिया गया था दैट टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट अ स्टैट्यूटरी कमीशन विल बी सेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 years. ठीक है, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही था. ठीक है, तो उसकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन को भेजा जाएगा. दैट स्टैट्यूटरी कमीशन वाज साइमन कमीशन, बट दैट केम 2 years बिफोर इट्स शेड्यूल. ठीक है, वो अपने शेड्यूल से 2 साल पहले ही कंट्री में आया. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए, दैट इज 1927. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए बेटा. 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आया था, which was chaired by John Simon, and all the political parties of our country basically boycotted the commission because there were no Indian members. और इसी साइमन कमीशन का रिप्लाई देते हुए फिर एक नेहरू कमेटी कांग्रेस ने बिठाई जिसने नेहरू रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन 1942 primarily to do what? क्रिप्स प्रपोजल आपने सुना होगा ना, क्रिप्स मिशन एक आया था which was headed by Sir Stafford Cripps,
So the Cripps mission was sent to India in 1942 primarily to do what? A. Propose a framework for the Indian Constitution. B. Seek Indian cooperation during World War II. C. Introduce provincial autonomy. Or D. Announce India's independence. What's the correct answer? क्रिप्स मिशन को प्राइमरली भेजने का कारण था टू सीक इंडियन कॉपरेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है, कि वॉर के बाद हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे आपके लिए. ठीक है, इन सारी चीजों के साथ, क्योंकि एक्सेस पावर्स जो वर्ल्ड वॉर टू में लड़ रही थी, है ना, दैट इंक्लूडेड जापान एज वेल. एंड जापान से इंडियन ओशन में जो भी ब्रिटेन का ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था उस पर इंपैक्ट आ रहा था. तो इंडियंस के सपोर्ट के लिए, इंडियंस के कोऑपरेशन के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया था 1942 में. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट इज which of the following acts first introduced separate electorates for Muslims in our country? Which of the following acts first introduced separate electorates for Muslims in India? A. Indian Councils Act of 1892. B. Indian Councils Act of 1909. C. Government of India Act 1919 or Government of India Act 1935. हाँ जी, what's the correct answer in question number 10th? 10th में आंसर क्या है भाई? Correct. So the act which introduced separate electorates for Muslim in India was Indian Councils Act of 1909. इसका एक और नाम क्या था? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ भाई. What was the other name of this particular act of 1909? So this act was also known as Morley-Minto Reforms. ठीक है, इसी एक्ट को हम मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स नाम से भी बुलाते थे. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच एक्ट वाज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएटेड. ठीक है, देखो पहले क्या होती थी, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुई. ठीक है, सो अंडर विच एक्ट वाज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएटेड? A. Charter Act of 1813. B. Charter Act of 1833. C. Government of India Act of 1858. ठीक है, and D. Indian Councils Act of 1861. What's the correct answer? Correct. The correct answer is option C. It is Charter Act of 1833. देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया. एंड फाइनली फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने उस पोजीशन को वाइसरॉय बनाया. ठीक है, क्लियर? Chalo, let's move to the next one. Now, the next question is, the Indian Independence Act of 1947 was passed by the British Parliament on which date? The Indian Independence Act of 1947 was passed by the British Parliament on which date? A. 15th August 1947. B. 26th January 1950. C. 18 July 1947. And D. 23rd March of 1947. शिवांगिनी बेटा, कल आपके सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस अलाइंड है मैराथन में, जो 1 बजे से स्टार्ट होगी. दैट विल इंक्लूड जीके एज वेल अमंग एआर एज वेल. ठीक है, तो कल आपके सारे सब्जेक्ट्स के अलाइन होगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीजन दैट व्हाई द क्लास गॉट शिफ्टेड फॉर टुमारो, बट टुमारो यू विल हैव द मैराथन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है, चलो 12th का आंसर इज, सो बी कैसे आंसर हो सकता है बेटा? बी नहीं हो सकता ना प्लीज. 1950 में कैसे पास होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? सो द करेक्ट आंसर वाज, इट इज 18th July of 1947. दिस इज द डेट ऑन विच द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड bicameralism in Indian legislature? Which act for the first time introduced bicameralism in Indian legislature? A. Government of India Act 1858. B. Government of India Act 1919.
C. Government of India Act 1935 or D. Indian Councils Act of 1909. What's the correct answer in question number 13th? हाँ जी, 13th का correct answer is correct. So the act which for the first time introduced bicameralism in our country, जहां पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको दो हाउसेस में कन्वर्ट कर दिया गया था, दैट एक्ट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन बी. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैबिनेट मिशन प्लान वाज सेंट टू इंडिया इन विच ईयर? The cabinet mission plan was sent to India in which year? A. 1945, B. 1946, C. 1947 or D. 1942? हाँ जी, what's the correct answer? The cabinet mission plan was sent to India in which year? Correct. So the cabinet mission plan was actually sent to India in 1946. This was basically a 3-member mission. Okay, this was basically a 3-member mission which included Sir A.V. Alexander, Sir Stafford Cripps, and Patrick Lawrence. Okay, so cabinet mission plan was basically a 3-member mission which was sent to India in the year 1946. Chalo, let's move to the next one. Now the next question is, who among the following was the Viceroy of India when the Indian Councils Act of 1909 was passed? Hanji, who among the following was the Viceroy of India when the Indian Councils Act of 1909 was passed? A. Lord Ripon, B. Lord Dufferin, C. Lord Curzon, and D. Lord Minto. What's the correct answer in question number 15th? 15th का answer is C. Curzon was the Viceroy of India at the time of Bengal's partition of 1905. ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 पास हुआ ना, एट दैट टाइम लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ आवर कंट्री. सिंपली याद रखो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है 1909 के एक्ट को, है ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है. मिंटो ओवर देयर वाज एक्चुअली द वाइसरॉय ऑफ द कंट्री. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट that allowed Indians to be a part of legislative council was the first British Parliament Act which allowed Indians to be a part of legislative council was, ठीक है, A. Indian Councils Act of 1861, B. Indian Councils Act of 1892, C. Indian Councils Act of 1909, and D. Government of India Act 1990. What's the correct answer? हाँ जी, the correct answer is A, B, C or D. करेक्ट बेटा गुंजन, इट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 बेटा, जहां पर 3 इंडियंस को अलाउ किया गया था टू बिकम पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, व्हिच बेसिकली इंक्लूडेड सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस एंड महाराजा ऑफ पटियाला. ठीक है, these 3 Indians were the first Indians to be associated with the Legislative Council of Viceroy. ठीक है, and that was allowed by the Indian Councils Act of 1861 बेटा. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is, who among the following was responsible for framing
the August offer of 1940. Who among the following was responsible for framing the August offer of 1940? A. Winston Churchill, B. Lord Wavell, C. Lord Linlithgow, or D. Lord Mountbatten? What's the correct answer? In question number 17, who among the following was responsible? Hanji. It was correct. It was Lord Linlithgow. Okay? Let's move to the next one. Now, the next question is, the Indian Constitution is divided into how many parts? Indian Constitution is divided into how many parts? A. 22, B. 25, C. 20, or D. 18? What's the correct answer? Indian Constitution is divided into how many parts, guys? A, B, C, or D? अरे ये तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये वाला तो बनना चाहिए. What's the correct answer? Correct. The Indian Constitution is actually divided into 22 parts. देखो क्वांटिटी बढ़ के वो 25 तक चली गई क्योंकि पार्ट 4A है ना, पार्ट 9A है आपके पास. बट व्हेन इट कम्स टू द नंबरिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्टिल डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स ओनली. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the preamble to the Indian Constitution is inspired by the Constitution of which country? The preamble to the Indian Constitution is inspired by the Constitution of which country? A. USA, B. UK, C. France, or D. Canada? Anji, what's the correct answer in question number 19th? 19th का answer is correct. So the correct answer in question number 19th is that the preamble of the Indian Constitution is inspired by option A, that is USA. USA बेटा, USA. ठीक है, UK नहीं है. USA was the first written constitution in the world to have a preamble to begin with. ठीक है, and US के ही constitution से inspiration लेके हमने decide किया कि हम preamble बनाएंगे. The preamble of our constitution was inspired from objective resolution. It was structured on objective resolution which was introduced by Pandit Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly. But the idea to have a preamble in the Indian Constitution to begin with was taken from USA. Okay? Chalo, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following parts of the Indian Constitution deals with fundamental rights? Which of the following parts of the Indian Constitution deal with fundamental rights? So the options are A, part 2, B, part 3, C, part 4, or D, part 5. हाँ जी, कौन से पार्ट में गिवन है आपके फंडामेंटल राइट्स? So that is something that is given under part 3 of the Constitution बेटा. Part 2 deals with citizenship, right? Part 4 deals with DPSP. And part 5 deals with union. Correct? So the correct answer over here was option B, that is part 3 of the Constitution. Okay? Chalo, let's move to the next one. Now, the next question is, okay? The next question is that the directive principles of the state policy are mentioned in which part of the Indian Constitution? Abhi answer कर दिया हमने तो इसको. हाँ जी, the DPSP are mentioned in which part of the Indian Constitution? A, part 3, B, part 4, C, part 6, and D, part 8. What's the correct answer? Which part of the Constitution deals with DPSP? Correct everyone. It is part 4 of the Constitution of India. Chalo, let's move to the next one. Now, the next question is, the Indian Constitution originally contained how many schedules? The Indian Constitution originally contained how many schedules? A, 12, B, 10, C, 8, or D, 9? What's the correct answer? The Indian Constitution originally contained how many schedules? The correct answer is
Correct, correct. The correct answer over here is option C, that it originally contained 8 schedules. बाद में amendment हो गया 12 हो चुके, but original constitution में there were 8 schedules which are given. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is, which part of the Constitution of India deals with union and its territory? Which part of the Constitution of India deals with union and its territory? A part 1, B part 2, C part 3 or D part 4? What's the correct answer? Hanji, which part of the Constitution of India deals with union and its territory? It's part 1, है ना? It's part 1 which runs from article 1 to article 4. That is the part which deals with union and its territory. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is, the emergency provisions are mentioned in which part of the Indian Constitution? The emergency provisions are mentioned in which part of the Indian Constitution? A part 14, B part 17, C part 18 and D part 21. What's the correct answer? The emergency provisions are mentioned in which part of the Constitution? Correct. Chalo, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following is not a feature of Indian Constitution? Which of the following, okay, which of the following is not a feature of Indian Constitution? जीके की क्लास के लिए स्पैम मत करो बेटा, सिंपल सी चीज है, कल मैराथन लगी हुई है, सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन है, 1 बजे से मैराथन स्टार्ट होगी, ठीक है, उसमें जीके और एआर दोनों चीजें कवर भी होंगी साथ में, ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, बी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सी फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस एंड डी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. व्हाट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर? यहां पे करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन बी, rigid and flexible है Indian Constitution. There is a federal structure with unitary biasness and there is parliamentary democracy. Presidential system is not a feature of Indian Constitution ना. We are a parliamentary system of government. Presidential system of government थोड़ी ना हम follow करते हैं, right? चलो, let's move to the next one. Now, the next question is, which schedule of the Indian Constitution contains provisions regarding allocation of seats in Rajya Sabha? Which schedule of the Indian Constitution contains provisions regarding allocation of seats in Rajya Sabha? A 5th schedule, B 7th schedule, C 4th schedule and D 6th schedule. What's the correct answer? हाँ जी, क्या correct answer है भाई? Which schedule deals with the allocation of seats in Rajya Sabha? So that's correct. That is 4th schedule of the Constitution of India. This is the schedule which deals with allocation of seats in Rajya Sabha. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is, how many articles were originally present in the Indian Constitution? How many articles were originally present in the Indian Constitution? A 395, B 448, C 365 and D 412. हाँ जी, how many articles were given in the original Constitution? A, B, C and D. What's the correct answer, guys? The correct answer is, so originally the Constitution of India had 395 articles in it. ठीक है, so the correct answer over here was option A. Option A. ठीक है, 395 बेटा, 395 articles were given in the original Constitution. ठीक है, चलो let's move to the next one. So the concept of fundamental duties was added to the Indian Constitution by which amendment?
The concept of fundamental duties. The concept of fundamental duties was added by which amendment to the Indian Constitution? A. 42nd, B. 44th, C. 52nd, or D. 73rd? What's the correct answer? किस अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था? So that was correct. It was 42nd Amendment Act of 1976, which led to the addition of Part 4A of the Constitution of India, which had only single article, that is Article 51A, जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following schedules of the Indian Constitution deals with anti-defection law? Which of the following schedules of the Indian Constitution deals with anti-defection law? A. 9th schedule, B. 10th schedule, C. 11th schedule, or D. 12th schedule? What's the correct answer? You'll get the PDF of all the sections, beta. परेशान मत हो. ठीक है, हाँ जी. Which schedule of the Indian Constitution deals with anti-defection laws? So that is correct. It is the 10th schedule of the Constitution of India. Okay? Which deals with anti-defection laws. Sure. Let's move to the next one. Now, the next question is, the 7th schedule of the Indian Constitution deals with what? The 7th schedule of the Indian Constitution deals with what? A. Division of power between union and states. B. Oath and affirmation. C. Emoluments of presidents and the governors. And D. Administration of tribal areas. What's the correct answer? The 7th schedule of the Indian Constitution deals with what? Anji. Kya correct answer hai bhai? Correct. So the 7th schedule of the Indian Constitution deals with division of powers between union and the state, wherein those three lists are given which divide the power between the units of our federation. Okay? So the correct answer over here was option A. Chalo. Let's move to the next one. Now, the next question is, which part of the Indian Constitution deals with the elections? Which part of the Indian Constitution deals with the election? A. Part 14, B. Part 15, C. Part 16, and D. Part 17. What's the correct answer? Which part of the Indian Constitution deals with elections? Now, this is something important from the perspective of your current affairs as well. है ना, इलेक्शन और इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज इंपॉर्टेंट ही हैं पेपर के पर्सपेक्टिव से भी. Which part deals with elections? It's part 15 beta, which runs from Article 324. है ना? It is part 15 of the Constitution which deals with elections. Okay? Chalo. Let's move to the next one. Now, the next question is, the emergency provisions in the Indian Constitution were inspired by the Constitution of which country? The emergency provisions in the Indian Constitution were inspired by the Constitution of which country? A. USA, B. Germany, C. Canada, and D. Australia. What's the correct answer? The emergency provisions were inspired from which country? Correct. The emergency provisions are basically inspired by the Constitution of Germany. Okay? Weimar Republic of Germany. Chalo. Let's move to the next one. Now, the next question is, how many schedules does the Indian Constitution currently have? How many schedules does the Indian Constitution currently have? इस point of time पे Constitution of India में कितने schedules present हैं? A 10, B 12, C 14 and D 16. A 10, B 12, C 14 and D 16. What's the correct answer? So currently the Constitution of India is having how many schedules? So that is B. It is having 12 schedules. Okay? Chalo. Let's move to the next one. Now, the next question is, which part of the Indian Constitution deals with the formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of the existing states? Okay? Which part of the Constitution of India deals with the formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states? A. Part 1, B. Part 2,
C part 3 and D part 4. What's the correct answer? ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स एंड एरियाज ऑफ द स्टेट है, अगेन पार्ट 1 से ही रिलेटेड होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर ही यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का है. यस और नो? राइट. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए, दैट इज पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the fundamental rights in the Indian constitution can be suspended during which type of emergency? The fundamental rights given in the Indian constitution can be suspended during which type of emergency? A. National emergency, B. State emergency, C. Financial emergency, and D. None of the above. What's the correct answer? The fundamental rights in the Indian constitution can be suspended during the operation of, correct, they can be suspended during the operation of national emergency. सिर्फ दो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, दैट इज द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अदर देन दैट बाकी सारे एफआरस को सस्पेंड किया जा सकता है और उनके एनफोर्समेंट को भी सस्पेंड किया जा सकता है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. The next question is, the governor of a state derives his authority from which part of the Indian constitution? The governor of a state derives his authority from which part of the Indian constitution? A. Part 4, B. Part 5, C. Part 6, D. Part 7. Hanji, what's the correct answer? The governor of a state derives his authority from which part? Part 4, 5, 6 or 7? हाँ जी, देखो, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट्स. हाँ, है ना, है ना. ही इज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट्स. स्टेट्स इज समथिंग इट इज गिवन अंडर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी बेटा, दैट इज पार्ट 6. ठीक है. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which article of the Indian Constitution mentions that India shall be a union of states? Which article of the Indian Constitution mentions that India shall be a union of states? A. Article 1, B. Article 2, C. Article 3, and D. Article 4. What's the correct answer? Which article of the Indian Constitution states that India shall be a union of state? Now, this is something it is given under, correct, that is something it is given under Article 1 of the Indian Constitution, because Article 1 simply says that India, that is Bharat, shall be a union of states, right? So the correct answer over here was option A. Chalo, let's move to the next one. Now the next question is, the Indian Constitution is called a bag of borrowings because it has taken provisions from various countries. ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बैग ऑफ बोरिंग कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस को लिया गया. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वाज बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम? इनमें से कौन से फीचर को हमने यूनाइटेड किंगडम से इंस्पायर कर लिया? ए. फंडामेंटल राइट्स, बी. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और डी. फंडामेंटल ड्यूटीज. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम? A, B, C or D? Correct answer is correct. The correct answer is option B. That is parliamentary system of government was something which was inspired from United Kingdom. So the correct answer over here was option B. Correct everyone. Chalo, let's move to the next one. Now the next question is, the concept of welfare state is reflected in which part of the Indian Constitution? The concept of welfare state is reflected in which part of the Indian Constitution? A. Part 3, B. Part 4, C. Part 5, or D. Part 6? हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? किस पार्ट में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट देखने के लिए मिलता है? वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट प्रिंसिपल. सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहां देखने के लिए मिलेंगे? ऑब्वियसली बात है, इन द डीपीएसपी. यस और नो? Correct. Very good. So the correct answer over here was option B, that is directive principles of the
state policy. ठीक है? चलो, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following is not a federal feature of the Indian Constitution? Which of the following is not a federal feature of the Indian Constitution? A. Single citizenship. B. Bicameral legislature. C. Division of powers. Or D. Independent judiciary. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? देखो, क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी ट्रिकी है इन द सेंस व्हेन वी लुक एट द फेडरल स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ, देन वी गेट सर्टेन फीचर्स इन दोज फेडरल स्ट्रक्चर्स. ठीक है? Whenever we look at the federal features of the government or the federal structures across the world, we get certain features which are present over there. इंडिया फेडरल है, बट इनमें से कौन सी चीज इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को पोर्ट्रे नहीं करती? इंडिया फेडरल तो है, ठीक है, इंडिया फेडरल तो है, बट इनमें से कौन सी चीज इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को पोर्ट्रे नहीं कर रही? बाइकैमरल लेजिस्लेचर फेडरेशन को शो कर रहा है, यस और नो? हाँ या ना, बताते जाओ. बाइकैमरल लेजिस्लेचर जब हमारे पास है तो वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को ही शो कर रहे हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. डिवीजन ऑफ पावर इज समथिंग विच इज सिने क्वा नॉन टू फेडरेशन, तो डिवीजन ऑफ पावर भी हमारे फेडरलिज्म को शो कर रहा है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगेन अ पार्ट ऑफ फेडरेशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? फेडरल या फेडरेशंस में क्या देखा गया था? दैट दे वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप. ठीक है? फेडरेशन या फेडरलिज्म में क्या, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर में क्या देखा गया, फेडरल स्ट्रक्चर्स में क्या देखा गया? दैट दे वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप. बट इंडिया में वो चीज है क्या? नहीं ना. तो इट इज द सिंगल सिटीजनशिप विच इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है? क्योंकि बाकी सारे फीचर्स तो हमारी कंट्री के फेडरेशन को ही शो कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम को ही पोर्ट्रे कर रहे हैं. So the correct answer over here was option A, that is the system of single citizenship. This is not a feature of the Indian federalism or federal feature of the Indian constitution. ठीक है? वो हमारे यूनिटरी बायसनेस को शो करता है. ठीक है? चलो, let's move to the next one. Now, the next question is, which fundamental right prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? Question क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है that which fundamental right prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. A. Right to equality. B. Right to freedom. C. Right against exploitation. Or D. Right to constitutional remedies. What's the correct answer? Which fundamental right prohibits discrimination on these grounds? So the correct answer is correct. It is right to equality. Correct. Chalo, let's move to the next one. Now, the next question is, which article provides protection against arbitrary arrest and detention? Which article, which article provides protection against arbitrary arrest and detention? A. Article 19, B. Article 20, C. Article 21, or D. Article 22. What's the correct answer in 42? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज, हाँ, इसमें कंफ्यूजन होता है, बट इसका आंसर इज डी बेटा. आर्टिकल 20 गिव्स अस प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस. आर्टिकल 22 गिव्स अस प्रोटेक्शन इन केसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन. ठीक है? सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन डी बेटा. ठीक है? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ the next question is, which of the following is not a part of right against exploitation? Which of the following is not a part of right against exploitation? Right against exploitation is something which is given under Article 23 and Article 24 of the Constitution. Yes or no? इनमें से कौन सी चीज Article 23 और 24 का पार्ट नहीं? A. Prohibition of human trafficking. B. Abolition of untouchability. C. Prohibition of child labor. And D. Prohibition of forced labor. What's the correct answer? Correct. It is abolition of untouchability.
This is not given under protection against exploitation, rather this is given under right to equality, है ना? इक्वालिटी में ही आर्टिकल 17 के अंडर में ये प्रोटेक्शन गिवन है. सो देयरफॉर करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन बी. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Now, the next question is, under which article can a person move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights? Under which article can a person move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights? A. Article 14, B. Article 19, C. Article 32, and D. Article 44. What's the correct answer? Anji, the correct answer is correct, everyone. Correct. It is Article 32 of the Constitution, which is known as right to constitutional remedies. Right? So the correct answer over here is option C. Chal, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following fundamental rights is available only to Indian citizens and not foreigners? Which of the following fundamental rights is available only to Indian citizens and not foreigners? A. Right to equality before law. B. Right to life and personal liberty. C. Right to protection and conviction for offences. Or D. Right against discrimination. Hanji, what's the correct answer? Which of the following fundamental right is available only to Indian citizens and not foreigners? So the correct answer is Hanji, करेक्ट बेटा, करेक्ट. दिस इज ऑप्शन डी, क्योंकि इन तीनों में जो एक चीज कॉमन है वो ये कि दीज आर अवेलेबल टू पर्सन, मतलब सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स बोथ. बट जब आप आर्टिकल 15 की बात करते हो, ठीक है, जब आप आर्टिकल 15 की बात करते हो ना, आर्टिकल 15 स्पेसिफिकली सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन्स on the grounds only of religion, race, caste, sex and place of birth. Yes or no? Article 15 में clearly वो चीज लिखी हुई है ना, that state shall not discriminate among the citizens, right? So therefore correct answer was option D. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is, which of the following articles protects the rights of the religious minorities to establish and manage educational institutions? Which of the following articles protects the rights of religious minorities to establish and manage educational institutions? A. 26, B. 27, C. 29, and D. 30. This was something which was in news because of minority educational institutions. Yes or no? है ना? Minority educational institutions की वजह से वो news में था. That is not 27 बेटा. 27 gives you protection from payment of taxes in the matters of promotion of religion. 27 थोड़ी है वो, it is article 30. ठीक है, so the correct answer over here is option D, that is article 30. चलो let's move to the next one. Now the next question is which of the following amendments inserted right to education as a fundamental right? Right to education was not part of the original constitution. Yes or no? It was subsequently added by a particular amendment. So the question is, which amendment added right to education as a fundamental right within the list of fundamental rights? A. 42nd Amendment, B. 44th Amendment, C. 86th Amendment, and D. 73rd Amendment. What's the correct answer? Right to education as a fundamental right was added by 86th Constitution Amendment Act of 2002. ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी. ठीक, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a ground on which the state can impose reasonable restriction on the right to freedom of speech and expression under article 19 clause 2? ठीक है, which of the following is not a ground on which the state can impose reasonable restrictions on the right to freedom of speech and expression under article 19 clause 2? वैश बेटा परेशान मत हो, कल देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो कल मैं आप लोगों को लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स ही पढ़ा दूंगा. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे,
लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स अगर टाइम मिलता है, अगर मैं डिसाइड करता हूं तो कल मैं आप लोग को अमेंडमेंट्स बढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड? भाई पब्लिक ऑर्डर इज अ ग्राउंड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी ग्राउंड है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी भी ग्राउंड है, रिलीजियस बिलीफ इज नॉट अ ग्राउंड ना, ऑन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following writs is issued by a court to prevent a lower court or tribunal from exceeding its jurisdiction? Which of the following writs is issued by a court to prevent a lower court or tribunal from exceeding its directions? A. Habeas corpus, B. certiorari, C. prohibition, or D. quo warranto? What's the correct answer? हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज प्रिवेंशन की बात की जा रही है ना, प्रिवेंशन की बात की जा रही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इट इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन बेटा, टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स अथॉरिटी, वहां पर आप प्रोहिबिशन रिट को यूज करते हो, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following provisions of the Indian Constitution, not Indian Constitution, which of the following provisions of the IT Act was struck down by the Supreme Court in Share Singhal versus Union of India for violating the right to freedom of speech and expression? हाँ जी, Section 377, Section 66A of IT Act, Section 124A of IPC, or D. Article 356 of the Constitution? What's the correct answer? Which of the following provision was struck down in the case of Share Singhal versus Union of India? So it was Section 66A of the IT Act. Chalo, let's look at the last question of the day. So the last question is, okay, second last question of the day, not the last, second last question of the day. Which of the following provisions make the right to life under Article 21 non-absolute? Which of the following provision makes the right to life under Article 21 non-absolute? A. Article 359, B. Doctrine of Eclipse, C. Procedure established by law, and D. None of the above. Hanji, what's the correct answer? So primarily you have to identify the reasonable restriction which can be imposed with respect to right to life given to us by Article 21 of the Constitution. So the correct answer is yes, that's procedure established by law, because the state is allowed to deprive someone of his life or liberty in accordance with the procedure established by law. And so this thing makes Article 21 as non-absolute right in nature. Okay? Chalo, let's look at the last question. No, not last. This is the second last question. Okay? This is the second last question. That which of the fundamental right was interpreted to include right to privacy by the Supreme Court in Justice Case Puttaswamy versus Union of India? ठीक है, हाँ जी, which of the following fundamental rights was interpreted to include the right to privacy by the Supreme Court in Justice Case Puttaswamy versus Union of India? A. 14, B. 19, C. 21, or D. 32? What's the correct answer? Right to privacy was considered as or interpreted as part of your liberty given under Article 21 of the Constitution. Okay? So the correct answer over here was option C bit. Okay? It was given under or it was interpreted under Article 21 of the Constitution of India. Okay? Chalo. Now pakka final wala last question of the day. Okay? Pakka wala last question of the day. And the last question is, the golden triangle of the fundamental rights in the Indian Constitution refers to which three articles? The golden triangle of fundamental rights within the Indian Constitution refers to which three articles? A. 14, 19, 21, B. 15, 16, 17, C. 32, 226 and 136, or D. 25, 26 and 27? What's the correct answer? The golden triangle of the fundamental rights refers to which three articles? Correct. So it basically refers to Article 14, 19 and
21 of the Constitution of India. ठीक है, this is something which is referred to as the golden trinity of the Indian Constitution. ठीक है, पीडीएफ चलो मैं पीडीएफ भिजवा दूंगा इसकी. ठीक है, बाकी कल आप लोगों की 1 बजे से मैराथन है, सो डू रिमेंबर दैट इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑल सब्जेक्ट्स मैराथन. तो सारे ही सब्जेक्ट्स आपके एआर, इंग्लिश, लॉजिकल, जीके, लीगल, सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट रहेंगी. ठीक, मैराथन कल 1 बजे से है, तो डोंट मिस दिस वन आउट. बाकी उसके अलावा अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ डिमांड्स हैं, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन वंस द सेशन इज ओवर. एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक द सेशन एज वेल. रेस्ट बेटा मैक्सिम्स कुछ आज मैंने कवर करा दिए, कुछ मैक्सिम्स मैं कल कवर करा दूंगा. एंड कल अगर आप लोग चाहो कि मैक्सिम्स के साथ आपको अमेंडमेंट पढ़ा दूं, ठीक है, तो वो मुझे बता देना, तो उस हिसाब से कल के सेशन को हम अलाइन कर लेंगे. ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज है बेटा कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों को भी वंस द सेशन इज ओवर जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, सो वी विल अलाइन टुमारोज सेशंस अकॉर्डिंगली. ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक द सेशन एज वेल. Rest, just take care of yourself, enjoy your day, है ना, keep studying and I'll see you soon. ठीक है, चलो, thank you so much guys, thank you so much everyone, thank you so much, thank you.